तो मैंने ये वाली बात बहुत बार सुनी है कि जब तुम वो काम कर रहे रहते हो जो तुम्हें दिल से पसंद है, तभी टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लो होने लग जाता है। और आज सेम सिचुएशन में मैं आके खड़ा हूँ। मतलब मुझे सीरियसली लग रहा है कि यार मैंने कुछ ही दिनों पहले अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 की सीरीज चालू की थी और मतलब इतने जल्दी अपन अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लास्ट वीडियो पे पहुंच चुके हैं। मतलब सच में बता रहा हूँ यार, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्विक था। मतलब क्या यार, मतलब इतने जल्दी क्यों ख़त्म हो जाते हैं गेम्स। तो चलो यार, इस गेम को एक लास्ट ट्रिब्यूट दे देते हैं और हमारे लास्ट दुश्मन को भी ख़त्म कर देंगे जिसका नाम है कार्नेज। तो यार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लास्ट वीडियो में। तो बिना किसी देरी के लेट्स डू दिस। Getting alarms from the Ravencroft Institute. Can anyone respond? Over. Dispatch, we got our hands full with the blackout and Oscorp. Cannot respond. Repeat, cannot respond. तो अगर तुम लोगों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा रहेगा तो उस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एंडिंग में इन लोगों ने क्लेटस के ऊपर कुछ क्रॉस स्पीशीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से उसमें से एक रेड कलर का फ्लूइड फ्लो होने लग गया था। और फिर इसके बाद जो चीज़ हमें देखने मिली वो बहुत ही एपिक भी थी और साथ साथ में डरावनी भी थी। तो अगर तुम्हें वो कट सीन देखना है तो प्लीज़ जाके मेरा लास्ट वाला वीडियो का एंडिंग पार्ट देख लो। तो यहाँ पे रेवनक्रॉफ्ट में भी बहुत सारी तबाही मच चुकी है और ये सब क्लेटस की वजह से हुआ है। और अगर तुम्हें पता नहीं है, रेवनक्रॉफ्ट में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो दुश्मन होते हैं उनको जेल की तरह रखा जाता है। और ये जो तुम लाल फ्लूइड देख रहे हो ये कार्नेज के कारनामे है, या फिर क्लेटस भी बोल सकते हो। क्लेटस उसका रियल नाम है कार्नेज का। तो सबसे पहले इन चिंदी बंदों को मार देते अपन, उसके बाद अपन जाएंगे कार्नेज से लड़ने। अबे यहाँ पे ही तो मारकर दिखा रहा था ये। ओके, इस बंदे को बचाना है अपन ने। Personal, just think you're a jerk. Get this off me! Thank you. I was so scared. Head for the bridge. The police will get you out. Victory. Boom! Shock butterflies when I fight the bad guys. Hey. तो सारे सिविलियंस को तो बचा लिया है अपन ने। Don't thank me yet. You need to get to safety. अभी इस बुढ़ऊ को बचा लेते हैं। भाई क्या गंदी वाली फटरी रहेगी उस बुड्ढे की। ओके, अपने को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ये। इनकमिंग। ओ, तो वो बंदे को मारे जा रहे हैं इन लोगों के। साइस्मिक ब्लास्ट यूज़ करना ही पड़ेगा मुझे। और ये चीज़ बहुत काम आने वाली है यहाँ पे। अगर उन लोग गैदर हो गए बुड्ढे के अराउंड तो हम लोग साइस्मिक ब्लास्ट यूज़ करके उनको मतलब दूर कर सकते हैं हमारे सस्पेक्ट के। आई एम सॉरी, मैं लास्ट वाले वीडियो में मर गया था, कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था मैं। और इन लोग स्पॉन होते ही जा रहे हैं यार। मैंने एक चीज़ नोटिस की, इन लोग ख़त्म हो ही नहीं रहे। तो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी फ़ाइट चलने वाली है, प्लीज़ बेयर कर लो। और अगर तुम्हें फ़ाइट नहीं देखनी है तो मैं शायद से टाइम स्टैम्प दे दूँगा ऊपर, तुम लोग वो पार्ट के ऊपर स्किप हो जाओ तो फिर तुम्हें आगे का देखने मिलेगा। लेकिन सबसे पहले यार इनको मारना ज़रूरी है। और फर्स्ट वाले अटेम्प्ट से तो यहाँ पे बहुत ही बेटर किया है अपन ने। मतलब सस्पेक्ट की हेल्थ देख सकते हो तुम लोग, कुछ लगा ही नहीं है वो बुड्ढे को। ऑलराइट। Mencken, right? You work for Oscorp. I'll try not to hold that against you. What happened here? It was Cassidy. We tried treating him with an experiment. You don't. I know what you and Fisk were up to. Using these people as guinea pigs. Okay, fine. But the danger's real. Cassidy changed into something horrible.
deadly, and he wants to make more like him. How do I stop Cassidy? I'm not sure you can. You'd have to overwhelm the symbiote we injected him with. Stop it from functioning. Inflict too much damage for it to handle. Perhaps with fire, or intense vibrations. It's all theoretical. We planned further studies, but... What did this nutball cocktail of yours do to him? I don't fully understand it. But like everything else, the goal was to cure the Osborns. In this case, by creating organic, intelligent life forms, nanites, that rely on the body's survival for their own. Now listen to me. Any disease, any damage, they can recognize and heal, as well as protect and defend the host. Symbiotic relationship. More. Cassidy's a loony psycho killer. When did he turn into a social butterfly? He had an abusive father, absent mother. He was always jealous of other kids with loving, stable families. So he's trying to create one? Yes. Out of the most dangerous inmates at Ravencroft. He wants to build a family in his image. I'll get you outside, which is more than you deserve. But then I have to go after Cassidy. I agree. He's headed for the sub-basements, where the most damaged inmates are kept. Now, if he makes them into beings like him, no place will be safe. तो इस बुड्ढे ने हमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसने कहा है कि इन लोगों ने कैसिडी के शरीर में एक सिम्बियोइड डाला है और वो सिम्बियोइड सेल्फ हील कर सकता है, मतलब कुछ भी डैमेज हो जाए वो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस कर सकता है। Okay, I'm fine from here. My car's outside. Get to a hospital. Tell the police everything. Or after I'm done with Cassidy, I'll come looking for you. भाई ये बंदा गड़बड़ लग रहा है मुझे। देख रहे हो तुम कैसी चाल बदल गई बुड्ढे की। और उसने हमें ये भी कहा है कि कार्नेज को हराने के सिर्फ दो ही मेथड्स हैं, या तो उसको फायर से ट्रीटमेंट दो, मतलब उसके अगेंस्ट में तुम आग यूज़ करो, या फिर इंटेंस वाइब्रेशन का यूज़ कर सकते हो तुम लोग। और अगर तुम लोगों ने स्पाइडरमैन 3 देखी रहेगी तो उसमें वेनम को भी पीटर ने इंटेंस वाइब्रेशन और रॉड को वाइब्रेट करके वेनम को मारा था। तो अपने पास अभी 2 ही इलाज है कैसिडी को हराने के। और हम लोगों ने उस बंदे से ये भी पूछा कि ऐसा वो कैसिडी क्यों कर रहा है, मतलब दूसरे लोगों को क्यों इन्फेक्ट कर रहा है वो। तो उससे पता चला कि कैसिडी के जो मम्मी पापा थे वो बहुत ही उनके आपस में रिलेशनशिप बहुत गंदे थे और घर में हमेशा केओस का माहौल रहता था और बहुत झगड़ते थे उन लोग। तो कैसिडी ऐसे बुरे बुरे दुश्मनों को, तो मैं क्या बोल रहा था, कैसिडी ऐसे बुरे बुरे दुश्मनों को अपनी फैमिली बना रहा है, मतलब अपने जैसा बना के। I get the feeling something seriously wrong was going on here. That water's got a live current in it. Stay on high ground. Oh no, I did! Oh yes, I did! It's not that you're bad at your job. Okay, it is. Electrical equipment, burn marks. I bet this is where they held Max Dillon. तो ये जो तुम्हारे सामने केज देख रहे हो, इसी में उन लोगों ने मैक्स डिलन एके इलेक्ट्रो को कैद करके रखा था और उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इन लोग। Stay out of that water, or I'm gonna get one heck of a jolt. The Venom Project. Huh, great. Why is it never the Puppy Project or the Chocolate Project?
Gotta stop Cassidy before he makes things even worse. Now, you're trapped in my web, little spider. Don't fear the darkness. What on earth is that? Actually, it doesn't look like anything from Earth. I've never seen anything so horrible in my life. Spider-Man. So many mouths to feed. I think I'll feed them you. That is the most disgusting thing I've ever seen. My friend is... Alright boys, we are in the end game now. Cassidy! That's as far as you go. One of you is already too many. I'm not Cletus Cassidy. Not anymore. I'm my true self now. I'm Carnage. एंड आई एम स्पाइडरमैन. ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही एडवांटेज की चीज़ हो गई. अपने पास ये फायर सोर्सेस पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो सिर्फ कार्नेज को मुझे इस सोर्स के पास ले आना है और फिर मैं इसे ऑन कर दूँगा ऐसे. You're just not ready to see the truth, are you? I didn't web up your mouth because I don't want you to suffocate. You're starting to talk me out of it. See, you think you're joking, but I know what you won't admit to yourself. When I killed those criminals, you were happy. You were grateful to me, weren't you? No, It's not too late to understand. I'll tell you whatever you want to know. You say you're searching for answers in death, but what were you trying to do when I stopped you? Make others like you? A family? So we can spread the message, the truth, that chaos and death are the only... Wrong. You're trying to create a family because you never had one. You weren't looking for death, Cletus. You wanted the life you never had. Now who's not seeing the truth? You said you killed to understand death. What are you trying to understand? The meaning, the truth, the secrets it reveals about all of us that we're afraid to see. I can tell you that. Death is a part of life. It happens. Sometimes for a reason, sometimes for no reason. You're wasting your time looking for some cosmic answer in death. Life is where you find meaning. And buddy, you've wasted yours. What makes you think I'm anything like you? You wanted to do what I did. End those criminals forever. That's true. I didn't want to admit it, but I'd be lying if I said I didn't feel that way. I knew it. But that's human. Anger, wanting revenge. It's not wrong to feel emotions like that. It's wrong to act on them. Here's the real difference between us, Spider-Man. I'm at peace with who I am. You shouldn't be. And you should? Then why aren't you? Sorry, Cletus. I just figured out talking to a psycho killer isn't gonna give me the answers I'm after. I know what will. Death. अब इसने अपना रियल रूप लिया है कार्नेज का. अभी मज़ा आने वाला है. जो किसी तरह इसको वो फायर सोर्सेस के पास ले आना है यार, लेकिन यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट लग रहा है मुझे. Hey, you'd be less nervous if you picture me naked. You know what? That's weird. Don't do that. बस धीरे धीरे उसको धक्का दे रहा हूँ मैं उस आग में. There you go.
तो मैं क्या करता हूँ, उसके नीचे का पहले सोर्स खोल देता हूँ। ओके, और उसके ऊपर फिर ऐसे बाउंस बैक हो जाऊँगा। आई थिंक मुझे मेरा सेस्मिक ब्लास्ट यूज़ करना है। ओके, वो यूज़ करना था मुझे, और वो आग में चला गया फिर से। ओहो, अपने कंपेनियंस भी साथ में ले आए हैं बंदा। ओह नो, अब लग रहा है मुझे थोड़ा डरना चाहिए मुझे। ओके, मैं क्या इनको सेस्मिक ब्लास्ट मार के दूर फेंक सकता हूँ? ओके, मैं कर सकता हूँ। नहीं भैया, ये गलत सीन हो रहा है यहाँ पे। अभी स्पाइडरमैन क्या लल्लूगिरी कर रहा है यार। मेरी हेल्थ बहुत कम है अभी। ओके, मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा पहले। ओके, वो गिर गया। इजी, इसको खोल दो और हील कर लो तब तक। ओके, ये बंदा हील करने नहीं देगा मुझे। क्या गंदा गेम है यार ये। मेरे को हील कैसे करने दे दिया इसने। ओके, मैं अभी हग रहा हूँ गंदा वाला। ओके, बू है, लग गई वो बंदे को। कमान, नीचे का फायर सोर्स भी चालू है। अब जलेगा ये गंदा वाला। बहुत सही खोल के रखा है यार अपन ने। ओह नो, उसकी हेल्थ धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही है। ओके, इन दोनों चेलों को भी शायद डाल दिया मैंने आग में। ये थोड़ा टफ है ऑब्वियसली यार, लास्ट फाइट है, टफ होने ही वाला है। लेकिन शायद से मैं ही गंदा खेल रहा हूँ यहाँ पे। मैं डॉज नहीं कर रहा एक भी अटैक्स इनके। कम ऑन यश, लास्ट फाइट है। आग में नहीं जाना है भाई, वो उन लोगों के लिए आग लगाई है मैंने। इजी लास्ट बंदा। हाँ भाई, मार ले तू भी साइड से। इजी, शायद ये भी गया। ओके, अभी इस बंदे को ढूंढना है अपन ने। बैठ जाए एक जगह पे। देयर यू गो, डॉज करते रहो। नहीं भाई, क्या कर रहा है पीटर। ओके ओके ओके, कहाँ पे है? जस्ट 1 HP है यार ये बंदे की। ओके, यहाँ पे है। ओके ओके ओके, शायद ख़त्म हो गया। आई थिंक अपन ने हमारे लास्ट बॉस को भी डिफीट कर दिया है। इजी यार, बहुत इजी। ओह नो, गेम ख़त्म हो गया। नहीं, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। None of us are gonna find any answers here. What's the matter, Peter? You look like you lost your last friend. Hey, but I know for a fact you've still got at least one. It's Uncle Ben. I miss him so much. I just feel lost without him. He raised me. I loved him. And he died because he was looking for me. I'm not sure how to live with that. Let me ask you something, Pilgrim. Your Uncle Ben, he was one of the best people I ever knew. Everyone loved him. He had an amazing life, right? So, why do you want to make it all about how it ended? What counts isn't how he died, Peter. What matters is really the way he lived. I want you to make his life mean something. I want you to be the man he raised you to be. The man that he was so proud of when he saw what you were growing into. He told you that? All the time. Your uncle knew what a tough place the world could be. He knew that it needs heroes. And hey, take it from me, you are one of those heroes. So what do you say? Are you gonna go out there and prove it? I want you to do it for Uncle Ben, and for me. Yeah. Yes, Dan. I will.
I miss Uncle Ben. I'll always miss him. But I don't have to replace him, because he already gave me everything I needed. Now it's up to me to honor his memory by using what he gave me, in a way that'll make him proud. Nuff said. Nuff said. ऑलराइट, तो इसी तरीके से हमारा एक अमेजिंग सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। मतलब ये जो दोनों पार्ट्स थे ना अमेजिंग स्पाइडरमैन 1-2 के, ये वन ऑफ द क्लासिक गेम्स बोलते हो ये उनमें से एक, और मेरे को लगता नहीं है कि कोई इन गेम्स को हेट कर सकता है। हर एक जन को ये दोनों पार्ट खेलने चाहिए। ये बहुत माइंड को रिलैक्स कर देगा तुम्हारे। और भाई मैं बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ ये दोनों गेम खेलो। और यार पता नहीं मैं कौन से नए गेम के साथ आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यार प्लीज़ तुम लोग कोई सजेशन दो मेरे को कौन से गेम्स खेलने चाहिए। और यार बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं है, तुम लोगों का इतना सही सपोर्ट आ रहा है ये सीरीज़ पे। मतलब यार मेरा तो माइंड ब्लोन हो चुका है यहाँ पे। जहाँ पे मेरे को 10-20 व्यूज़ आते थे, आज हर एक वीडियो पे 100 व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, तो स्टे सेफ, अपनी फैमिली का ख्याल रखो और अपने ड्रीम पे काम करते रहो, अपने सपनों पे काम करते रहो, क्योंकि एंड में वो ही मैटर करने वाला है। पैसा आएगा जाएगा, पर साइड में अपने ड्रीम्स पे भी काम किया करो, क्योंकि ड्रीम्स ही तुम्हें जिंदा रखते हैं अंदर से। तो चलो यार, मिलता हूँ तुमसे एक अगली सीरीज में एक अगले गेम के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम। Oh, you can rely on me, Mr. Mayor. I consider it my honor to provide any help I can. What happened to young Osborn is tragic, but never fear. I'll continue to finance the task force myself. And, at the risk of seeming overconfident, I promise you, with the criminal organizations that plagued our city crushed, the crime rate will go down to a manageable level. Yeah, goodbye. There you are. Come in, my friend. Come in. I couldn't have done this without you. Chameleon. What happens now? Now, the real work begins.